Human resource is the most valuable resource. People and values to me are the most critical thing that determine the future of any enterprise and sustainability of any enterprise. Human touch and care is another very important thing, because at the end of the day, I think we are all emotional creatures. उनके साथ बर्ताव भी इसी रूप में होना चाहिए कि उन्हें अपनापन महसूस हो. We are very fortunate to have this feeling of belonging and togetherness. This has been possible through relationships built on trust, caring, and mutual respect. But being fair to everybody, whether he is your supplier, whether he is your customer, whether he is your worker, any stakeholder, you would not like to unjustifiably deny them of whatever is due, or let us say any treatment which will be unfair to them. But at least if it comes to your notice, you try to see that a person doesn't get an unfair deal. Cement is a commodity in many senses. You don't have a repeat purchase in cement. It's that one time in life that people buy from you. After all, most people are putting their life's savings into building a house. And a lot of business actually happens because people trust being with you, doing business with you. So unless those relationships are strong and unless there's trust and comfort with working with a company, you don't get enough traction or business results. So in that sense, people, whether externally or internally, make all the difference. हमारी जो कंपनी है 1966 में बनी थी, उस समय से हम जुड़े हुए हैं. मेरे पापा ने वो कंपनी को चालू की. मैं एक इनका सप्लायर भी हूँ, इनका परचेजर भी हूँ, और इनसे सेवा के मैं कुछ सेवा संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ. ये समाज की सेवा के लिए और उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं. जैसे हमने एक सेवा सदन किया अस्पताल, उसमें इन्होंने करीब एक लिफ्ट के लिए पूरा पैसा दिया है. फिर उधर में हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बनबंधु परिषद की एकल विद्यालय चल रही है. एकल विद्यालय मतलब एक टीचर एक स्कूल हर गांव में खोलना है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा सहयोग है. ये काफ़ी स्कूलें चला रहे हैं. और क्या है कि ठीक है, दे आर वेरी हार्ड टास्क मास्टर, बहुत अच्छे से मतलब नेगोशिएट करके लेते हैं. बट क्या कि इनको देने के बाद में खुशी होती है कि हमारी जो मटेरियल्स है उनकी हैंडलिंग भी अच्छी होती है, तो हमें एक अच्छा नाम मिलता है. अगर इनको कोई सही चीज़ के लिए अप्रोच किया जाए तो ऊपर तक सहायता मिलती है, लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं. और अगर हम कुछ सही बात बोलते हैं तो उसको ये लोग इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं. तो इससे लगता है कि भाई हाँ, ये लोग अपने कस्टमर्स को भी या अपने सप्लायर्स को भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं. दिवाकर सामंत, बंदुर्गा एंटरप्राइजेस, जसपुर टाउन. करीबन 30 साल हो जाएगा. पिताजी काम कर रहे थे, उसके बाद मैं भी काम कर रहा हूँ. कोई तकलीफ नहीं है कंपनी की तरफ से. और जो सर्विस मुझे चाहिए टाइम टू टाइम तो चेंज हो रहा है ना, बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस जो भी हो रहा है, कंपनी सपोर्ट दे रहा है. स्कैरसिटी जब आता है उस टाइम में भी माल ठीक से हमको मिल जाता है. और जितना ऑफिसर्स लोग हैं सेल्स में, ये तो पुराना एकदम एक तो फैमिली टाइप का हो गया. हम लोग इनके डायरेक्ट कस्टमर भी डील करते हैं जो प्रोजेक्ट में रहते हैं, और बिल्डर्स जो छोटे छोटे उनको भी डील करते हैं, और जो हाउस अपने बनाते हैं, पर्सनल हाउस बनाते हैं, उनको भी डील करते हैं. ये तो बहुत ही बढ़िया रहा बोल के हम लोग इतने साल तक चल रहे हैं. हमारी पूरी फैमिली इनके साथ अटैच है लास्ट 60 ईयर्स से. आज राउरकेला में कंपनी मार्केट लीडर है, रियलाइजेशन लीडर है, एंड मार्केट शेयरिंग लीडर भी है, ब्रांड लीडर भी है. जब भी डीलर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, मार्केटिंग और सेल्स के विषय में कम बात करते हैं, डीलर की हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और कैसे फेयर बिजनेस करना है, और हमेशा डीलर का बहुत केयर लेते हैं. अभी उन्होंने डीलर के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी भी की हुई है. एक डीलर कॉन्फ्रेंस में हम लोग पूरी गए हुए थे, तो वहाँ जस्ट रघुजी डालमिया जी की तबीयत खराब हो गई थी. मैं जस्ट पूछने चला गया तो वहाँ आभा जी, मैडम आभा जी मिल गई थी. तो उन्होंने जब मेरा परिचय जाना कि मैं राजनपुर से हूँ, दीनानाथ जी के यहाँ से जानती थी हमें, तो वहाँ हमको ज़बरदस्ती बैठा के पोस्ट खाना खा के जाओगे, तो बैठा के अपने सामने खड़े रह के खाना मंगा के खिलाया. वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कुछ. जयंत कुमार जन्ना. देखिए, फ्लीट मैनेजमेंट करता हूँ, फ्लीट का काम करता हूँ, और सीमेंट का डीलरशिप काम करता हूँ. उनका जो ब्रांड इमेज है वो भी हमारा लोकल जो रूरल एरिया में बहुत अच्छा ये है. मन में देखिए, जो ब्रांड है पहले कोणार्क को प्राधान्य देता है. हाँ, ये तो भी मेरा निजी कंपनी है. मैं तो वही 13 साल से वहाँ पर भी काम करता हूँ. एक्सक्लूसिव डीलर हूँ उनका. वो सेल ब्रांड देखिए, क्वालिटी के लिए पूरा अच्छा है.
जब वो रूप पकाता है छत, मुझे कोना का यूज करता है, वो दूसरा सीमेंट यूज नहीं करता है. I am Sudarshan. I am representing company Karur KCP Packagings Limited. We are suppliers of paper bags, and we have been earlier supplying polypropylene bags also to Dalmia Cements. My managing director, Mr. K.C. Palanichami, started his business by getting order in 1964 from Dalmia Cements for supplying refurbished gunny bags. So we have a very good, excellent relationship with Dalmia Cements, and all peoples are very cordial. And whenever we have any genuine problems, whatever best they can able to do, they are extending their fuller support to us. See, they are one of the oldest cement plant in South. Since then, they have been consistently maintaining the quality, and 47 years a supplier getting associated with a company is not a small thing. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா வேலை செய்கிறதுல வந்து குவாலிட்டி இருக்குது. அதனால் டாலியா போய் நான் வந்து 4-5 பில்டிங் கட்டியிருக்கோம். 4 பில்டிங் கட்டியிருக்கோம். எல்லா சிமெண்ட்டை விட இது ஒரு குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ரேட்டும் ரீசனபிளாக இருக்கனால நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன். I am Samarjit Sahu. Well, we are basically into government contracts like making roads, bridges, flyovers. Maybe around 20 years, because it has been started my father. Must be around 20 years. And we are using in almost most of our projects. We are using OCL cements. There is a gap of supply, demand supply here, of other brands also. So for large consumers like us, OCL is good, and when I say they give the required strength, and we require supplies to go ahead with the project. With that, they stand by us, no issues in that. We work with Dalmia as a CFA and on some other fronts with their other group companies like refractories for exports, etc. Since more than 30 years. In Dalmia, the family values and the family culture has obviously been much more stronger. As a business owner myself, or what I look up to Dalmia family is the way what they teach or what they tell people and what they talk about in their management philosophies is what they practice. Dalmia has very focused on one thing, that our quality cannot be compromised on any front. They've been around as long as cement industry in India has been around, so our whole forte into cement has been can be associated to Dalmia. Obviously, with their support, and we've been able to go beyond just one company and been able to do some other things. But as far as the basic point of getting into cement was purely because of Dalmia. मेरा नाम राजेश अग्रवाल है. मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है बेसिकली. 15 इयर्स में तो अच्छा ही रहा काफ़ी. इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम. हमारा कंजप्शन बेसिकली 20,000 पर मंथ होता है, तो अराउंड 60% वी आर टेकिंग फ्रॉम OCL ओनली. बेसिकली रीज़न इज़ क्वालिटी. फर्स्ट इज़ क्वालिटी, सेकेंड इज़ यू कैन से सर्विस. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड इन ओडिशा वी आर कंस्ट्रक्टिंग, कटक पारादीप रोड, जो टोटल कंक्रीट का रोड हो रहा है. वहाँ एक ही ब्रांड सीमेंट लगती है, OCL की. நாங்கள் வந்து இப்போ எப்படின்னா, எங்கள் அப்பா கட்டினது டால்மியா, அதுக்கு அடுத்தது இப்போ எங்களை சுற்றி இருக்கவங்க டால்மியாவில் தான் பண்ணுறாங்க. அதை வச்சு நாங்களும் டால்மியா. We are supplying paper bags to Dalmia Cements. We have a very long association with Dalmia. It's almost more than 16 to 17 years old. So we started from scratches with Dalmia. At that time our business was so small, and today roughly we are doing about approximately 10 to 13 crores worth of business annually. Sundaram, cement, fertilizer, agrochemicals, animal feeds from 1938. என்னுடைய தந்தை செஞ்ச வியாபாரத்தை நான் 1970 தொடர்ந்து செய்கிறேன். அப்போ 1938 பார்த்திங்கன்னா இங்கே அதுக்கு ஒன்ற சான்று கொண்டு வந்திருக்கேன். அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, தஞ்சாவூர் டவுனு, திருவையாறுக்கு மேற்க, கல்லணைக்கு கிழக்க சிமெண்ட்டு விற்பனை பண்ணலான்னு ஒரு ஒப்பந்தம் அப்போ பண்ணியிருக்காங்க. அது வெளி மாநிலத்திலேருந்து நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்து
அங்கேருந்து பூதலூர், அப்போல்லாம் போக்குவரத்து வசதி லாரியெல்லாம் கிடையாது. பூதலூருக்கு வந்து பூதலூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து திருக்காட்டுப்பள்ளி, பூதலூர், அது மாதிரி பல கிராமங்களில் கூட கொண்டு போய் விற்றுருக்கோம். இப்போ என்னுடைய கருத்து என்னென்னா, டால்மியாவுடைய கொடியை நான் உயர்ந்து பிடிச்சவன் ஒரு வியாபாரி. எந்த ஒரு தட்டுப்பாடு நேரத்தில் கூட வாடிக்கையாளர் தான் அந்த சிமெண்ட்டு போய் சேரணும்னு நினச்சாரு. அதுக்காக அங்கே வாடிக்கையாளர்கிட்ட வந்து முறையாக நியாயமாக அந்த பொருள் நியாயமான விலைக்கு போகிறதுக்காக நிறையா பாடுபட்டிருக்கேன். உதாரணத்துக்கு இப்போ எங்கள் பகுதியில் பூண்டி மாதா கோயில்னு ஒரு பெரிய பாசாலிக்காவாக மாறிடுச்சு. அந்த சாமியார் கூட கடனை கொடுத்து ஒரு சிறிய அளவில் பண்ண இது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய தெய்வலோகம் மாதிரியாக கூட அந்த ஒரு பெரிய ஒரு இந்த ஸ்தலமாக மாறிடுச்சு. संजय कुमार महापात्र। तो 1980 से 80 से एक तो उड़ीसा में जो कोणार्क का नाम से आदमी लोग का मन में है जो कोणार्क सीमेंट अच्छा है। आप कोणार्क सीमेंट में जितना दूसरा सीमेंट में समझाओ वो घर तक ले जाएगा, छत वो बोलेगा हम वो सेल से हम ढलाई करेंगे। अभी जो कटक में प्लांट हो गया हम लोग के लिए अच्छा हुआ। एक तो फ्रेश मेल मिल जाएगा और सुबह उठ के देखो काम हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कस्टमर पास भी मिल जाता है, डायरेक्ट पेटी में हो डीलर में हो, टेंशन नहीं है, जितना ऑर्डर दो सुबह मिल जाएगा। We run a company called KFL Infra Logistics Private Limited. We are the CFA partners for Dalmia Cement in Tamil Nadu North, Tamil Nadu West and North Kerala. It is the second generation, but it's been about 45 years. I think 67, 68 is when the first business relationship had started. In this company or in this group, a lot is importance is given to trust and to personal relationships also. I don't know how to put it in words, but it's more than just a business relationship. Generally, in large organizations, you don't get access to senior management to discuss your issues. A lot of inputs of ours are taken on while formulating policies, so that which is beneficial to both us as well as the company. There are limitations with a small company like ours, and they factor that in their policies. We started out like a small business, and our family has grown along with Dalmia Cement to a great extent, and that's one thing we really admire, that they've taken us as partners along with them in the growth. So we look forward to doing that even in the future.